हरिओम तत्सत। आज हम लोग पहले अध्याय के 13वें श्लोक का पाठ करना सीखेंगे। हम एक बार बोलेंगे, आप हमारे बाद में 3 बार दोहराइएगा। तथा शंखाश्च, ततः शंखाश्च, ततः शंखाश्च, ततः शंखाश्च, भैर्यश्च, 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 ततः शंखाश्च भैर्यश्च, ततः शंखाश्च, भैर्यश्च, ततः शंखाश्च, भैर्यश्च, ततः शंखाश्च, भैर्यश्च, पड़वानक, 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 गोमुखाः, 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 पड़वानक गोमुखाः, पड़वानक गोमुखाः, पड़वानक गोमुखाः, पड़वानक गोमुखाः, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः, ततः शंखाश्च, भैर्यश्च, पड़वानक गोमुखाः, ततः शंखाश्च, भैर्यश्च, पड़वानक गोमुखाः, ततः शंखाश्च, भैर्यश्च, पड़वानक गोमुखाः, सहसैवाभ्य, 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 हन्यन्त, 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 सहसैवाभ्य हन्यन्त, सहसैवाभ्य हन्यन्त, सहसैवाभ्य हन्यन्त, सहसैवाभ्य हन्यन्त, सशब्दस्, 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 तुमुलोभवत्, 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 सशब्दस्तुमुलोभवत्, 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 सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोभवत्, सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोभवत्, सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोभवत्, सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोभवत्, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः, सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोभवत्, ततः शंखाश्च, भैर्यश्च, पड़वानक गोमुखाः, सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोभवत्, ततः शंखाश्च, भैर्यश्च, पड़वानक गोमुखाः, सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोभवत्, ततः शंखाश्च, भैर्यश्च, पड़वानक गोमुखाः, सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोभवत्। अब बिना देखे ये श्लोक पढ़कर सुनाइए। ततः शंखाश्च, भैर्यश्च, पड़वानक गोमुखाः, सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोभवत्। हरिओम तत्सत।